Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our last lesson of cell cycle unit number 5 grade 9. Our final topic is significance of meiosis 2 sorry. Objectives are significance of meiosis 2, maintenance of chromosomes in next generation, production of a variation, errors in meiosis, comparison of mitosis and meiosis, apoptosis and necrosis, maintenance of chromosomes in next generation. Meiosis is essential for sexual reproduction. In humans, diploid gamete mother cells or germ-line cells undergo meiosis to produce हैप्लॉइड गैमेट्स बनाने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं. मेल एंड अ फीमेल गैमेट्स यूनाइट टू फॉर्म डिप्लॉइड zygote, one end from mother and one end from father, which undergoes repeated mitosis, develops into a new diploid human. I already told you, one from one end from the mother and one end from father. Many haploid fungi and protozoans produce haploid gametes through mitosis. Plant life cycle shows alteration of generation. Alteration matlab changes. The cells of a diploid sporophyte generation undergoes meiosis to produce haploid spores, which grow into haploid gametogeneration. Gametophyte generation produce haploid gametes through mitosis. The gametes combine to produce diploid zygote. Gametes जब combine होंगे तो diploid zygote बनेगा. Zygote undergoes repeated mitosis to become diploid sporophyte. इससे ये एक complete generation new baby का base बन जाएगी. Production of a variation in next generation. The chromosome pair of each parent undergo crossing over during meiosis. So daughter cells gametes have a genetic variation. When gametes fuse and form zygote, its genetic makeup is different from both parents. Thus meiosis allows a species to bring variations in next generation. Beneficial variation help organism to adopt the changes in environment. वो इस काबिल होंगे कि environment के changes को इख्तियार कर सकें, adopt कर सकें. Errors in meiosis. During anaphase 1 chromosomes separate, अलहदा हो जाते हैं and go to opposite poles. We already studied poles. While during anaphase 2 sister chromosomes separate, वो अलहदा होते हैं. It is called the disjunction, which is shown in diagram. Sometimes the separation is not normal. It is called non-disjunction. तो नीचे आपको abnormally disjunction non-disjunction दिखाया गया है. This results in the production of a gametes which have either more or a less than normal number of chromosomes. If such abnormal gamete fuses with a normal gamete, it results abnormal chromosomes number in next generation. For example, 47 or 45. If there is 46 chromosome, it will be normal, but in this case 47 or 45 chromosomes in humans, this will be the error in meiosis. Comparison between mitosis and meiosis. Meiosis 2 is similar to mitosis, while meiosis 1 makes the actual difference between these two cell division. Mitosis सबसे पहला प्रोफेज होगा. Duplicated chromosomes to sister chromatids. मेटाफेज उसके बाद फॉलो करेगा उसको एनाफेज देन, और आपके पास लास्ट में डॉटर सेल्स ऑफ आ माइटोसिस बन जाएंगे. मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होगी सबसे पहले, उसके बाद क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होगा, उसके बाद टेट्रेड फॉर्म्ड बाय द स्नैप्सिस ऑफ आ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनेंगे. टेट्रेड मीन होता है कि 2n बनते हैं माइटोसिस में, जबकि टेट्रेड में 4n होंगे. अप्लाइड n बनेंगे, 4 क्रोमोसोम्स के पार्ट अलहदा होंगे. मेटाफेज 1 इसे कहेंगे. होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, स्नैपिसिस 1
सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन टुगेदर, वो इकट्ठे रहेंगे। एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 2 परफॉर्म हो गए इस सेक्शन में, और हैप्लाइड एन बनेंगे जो कि कपल ऑफ एन के इक्वल होंगे। मियोसिस 2 में जब हम बात करेंगे, नो फर्दर क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, एनाफेज 2 अकर ड्यूरिंग सेल्स ऑफ अ मियोसिस। 4 आपके पास अप्लाइड एन आपके सामने शो किए गए हैं डायग्राम में। Apoptosis is one of the main types of a programmed cell death. During apoptosis, cell shrinks and becomes rounded due to the breakdown of a cytoskeleton by enzyme. Enzyme cytoskeleton को break down करेगा तो उससे जनाब सेल shrink हो जाएगा और become rounded और round shape में आ जाएगा। Its chromatin undergoes condensation and a nuclear envelope breaks. डायग्राम जो दी गई उसके टॉप राइट साइड पर देखें, क्रोमेटिन कंडेंसेशन दिखाया गया है कि वो आउट ऑफ शेप होगा। उसके बाद नेक्स्ट में वो मेम्ब्रेन ब्लेबिंग करेगी, बनेगी इधर आपकी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में न्यूक्लियर इन्वेलप कोलैप्स कर जाएगा, वो ब्रेक डाउन होगा और एंड पर आपके एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्म हो जाएगी, बन जाएगी। न्यूक्लियस spreads in the form of a several discrete chromatin bodies. Cell's membrane makes irregular buds known as blebs. Blebs break off from the cell and are now called the apoptotic bodies, which are the phagocytosed by other cells, दूसरे cells की मदद से। Apoptosis can be occur when a cell is damaged or undergoes a stress condition. Apoptosis moves the damaged cell, preventing it from getting further nutrients or to prevent the spread of infections. Apoptosis also give advantages during development. For example, during the formation of a finger, the cells between them undergo apoptosis and the digits separate. In an adult human, 50 to 70 billion 50 to 70 अरब सेल्स होते हैं डाई ईच डे बाई एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की मदद से 50 से 70 अरब सेल एक दिन में डेथ हो जाती है उनकी। नेक्रोसिस Necrosis is the accidental death of a cells and a living tissues. Necrosis is a less sequential than apoptosis. Causes: there are many causes of a necrosis, including injury, infection, cancer. Necrosis may occur when a cell is given hypoxic, means less oxygen, ऑक्सीजन के बिना, कम ऑक्सीजन के साथ। Environment necrosis may be due to the lack of a proper care to a wound site, जहाँ जख्म होता है proper care होती है साइड की। During necrosis, there is a release of a special enzymes from lysosome. Lysosomal enzymes break cellular components and may also be released outside cell to break surrounding cell. इनके गिर्द जो सेल होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए। Cells that die by necrosis may also release harmful chemical that damage other cells. Okay students, Allah Hafiz.